बिजनेस में मैनी टाइम्स चेक्स जो हैं डिसऑनर हो जाते हैं। आज हम चेक डिसऑनर के केस में एक ऐसी सिचुएशन जो कि अब रेयर नहीं रह गई, उस सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें आप एक कंपनी के डायरेक्टर थे, आपने उस कंपनी में डायरेक्टरशिप होते हुए आपने चेक्स इशू करे और वो चेक्स डिसऑनर्ड हो गए। लेटर ऑन आपकी जो कंपनी है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी चलेगी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। ओके, अब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक रेजोल्यूशन भी पास हो गया कि आपने कंपनी को लेट्स से चेक्स जो आपने इशू किया था किसी क्रेडिटर को, उसको अब एक्स अमाउंट ही देना है, उसके अलावा कोई अमाउंट नहीं देना। तो इस सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन था कि डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या रहेगी कि जब आईबीसी के रेजोल्यूशन प्रोसेस जब पास हो रहा था, तो देन एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है जिसमें कंपनी की लायबिलिटी तो डिसाइड हो गई, लेकिन डायरेक्टर की क्रिमिनल लायबिलिटी इन ए चेक डिसऑनर केस में क्या आएगी। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अजय कुमार राधेश्याम गोयनका वर्सेस टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस जजमेंट का हम फैक्चुअल मैट्रिक्स समझेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी क्या रहेगी इन ए चेक डिसऑनर केस, स्पेसिफिकली इन द सिनेरियो पोस्ट रेजोल्यूशन। ओके, सेकंड इज हम प्रोसीजरल हिस्ट्री को समझेंगे कि कैसे ये मैटर जो है लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। थर्ड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस क्या रहा on the continuity of the check dishonor case post IBC resolution. And finally, Honorable Supreme Court की conclusive finding क्या थी, which is in fact is an affirming a director's personal liability even after the IBC resolution has been passed. आगे बढ़ने से पहले आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट को, जो कि हमने चेक बाउंस के रिलेटेड मैटर्स के जजमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग प्लेलिस्ट जनरेट करी है, उसको आप जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस सिनेरियोज में किस तरह से डिफरेंट रूल ऑफ द लॉ एस्टेब्लिश किए हैं। अगर आप भी एनआई केस को हैंडल कर रहे हो या फिर आप या तो कंप्लेनेंट हो या एक्यूज हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम रेगुलरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट्स रहेंगी ऑन दी एनआई मैटर्स के रिलेशन में, उसको हम अपलोड करेंगे। तो लेट अस नाउ मूव फर्दर एंड डिस्कस दिस जजमेंट इन डिटेल। ये जो जजमेंट 3 जज बेंच की जजमेंट थी, इसमें से हमारे पास 2 ओपिनियन निकल के आए। फर्स्ट ओपिनियन वाज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल एंड ऑनरेबल जस्टिस अबे एस ओका का था, एंड सेकंड जजमेंट जो था वो था ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला का। Now let us quickly understand facts of the case in detail so that we can go through the findings of the judgment so that we can actually grasp the gist of the judgment. अगर हम brief facts के बारे में समझे, जो complainant था टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड था, इसने obviously एक टर्म लोन दे रखा था 30 करोड़ रुपीस का टू द एक्यूज्ड कंपनी जो कि रेनबो पेपर्स लिमिटेड थी। अब इस एक्यूज्ड कंपनी के जो डायरेक्टर थे, वन ऑफ द प्रमोटर एंड डायरेक्टर, ही वाज द मिस्टर अजय कुमार राधेश्याम गोयनका, ही वाज द प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इस टर्म लोन्स को जब कंपनी ईएमआई पेमेंट रिलीज कर रही थी, तो वन ऑफ द पेमेंट जो थी पोस्ट डेटेड चेक जो कि 25 लाख के करीब था, वो उन्होंने पेमेंट के इंस्टॉलेशन करने के लिए दिया, एंड दैट चेक जो था वो डिसऑनर्ड हो गया। जो कंप्लेनेंट था उसने स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 138, और कंपनी ने जब रिप्लाई भेजा इस डिमांड नोटिस पे, एक्नॉलेज किया कि यस कंपनी का ये डेट है एंड वी विल पे यू। मीनवाइल एक क्रिमिनल कंप्लेंट ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 138, 141 एंड 142 ऑफ द एनआई एक्ट के अंडर फाइल कर दी गई।
कंप्लेनेंट का व्यू क्लियर था कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस बाय द कंपनी एज वेल एज द डायरेक्टर, कंपनी जो कि रेनबो पेपर्स लिमिटेड, जो कि फर्दर वी विल सी इट वेंट थ्रू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और डायरेक्टर्स का व्यू ये था कि मैटर लिंक टू द डेट एंड कॉम्प्लिकेटेड बाय द इंसॉल्वेंसी, मीन्स टू से कि ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड through a resolution that the liability of the company stands fixed by this resolution. So let us now quickly go through the dates associated with the matter that would help us to understand what exactly happened at what time. तो अभी तक हमने 2012 से लेके जब लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बाद हमने इस 2016 तक तो आ गए कि जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने एक एनआई कंप्लेंट फाइल कर दी गई अगेंस्ट दी accused company as well as the accused जो कि promoter and director of the accused company थे। अब उसके बाद आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस कंप्लेंट एक इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल करी जाती है अगेंस्ट द accused कंपनी। ओके, उसके बाद 2017 में कंप्लेनेंट जो था, जो कि इस एसएलपी में ही वाज द रिस्पोंडेंट ऑल्सो, उसने अपना क्लेम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने फाइल भी कर दिया। आईबीसी प्रोसीडिंग्स में कंप्लेनेंट पार्टिसिपेटेड कंप्लीटली। अब एनसीएलटी की प्रोसीडिंग जो लगभग 2019 में अप्रूव्ड ए रेजोल्यूशन प्लान फॉर द एक्यूज्ड कंपनी, राइट। जैसे ही ये प्लान अप्रूव्ड हो गया, तो जो एक्यूज कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ही फाइल्ड ए एप्लीकेशन बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीकिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द क्रिमिनल कंप्लेंट, बिकॉज जो डेट था अगेंस्ट द मेन कंपनी जो कि एक्यूज की ही कंपनी थी, स्टूड सेटल्ड इन द प्रोसीडिंग्स अंडर द आईबीसी। तो इसलिए मेन डेट क्योंकि सेटल हो गया है, तो जो प्राइमरी एक्यूज्ड है जो कि डायरेक्टर की कंपनी है, वो ही एक्यूज नहीं रहेगी, तो देन हाउ कम द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ बीइंग द प्रमोटर और द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विल कम इनटू पिक्चर। उनका इस बेसिस के ऊपर जब उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करी, तो वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसमिस कर दी। उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को वो सेशन कोर्ट्स में ले गए एंड वहां पर भी डायरेक्टर्स की जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी रिवीजन पिटीशन के रूप में डिसमिस हो गई। अब जो डायरेक्टर थे, he did not go to the honorable high court but went directly to the honorable supreme court. Okay, bypassing the high court because of the reasons were there were already pending applications before the honorable supreme court on this question, and that is why the जो council थे उन्होंने honorable supreme court को सबसे पहले इसी point पे satisfy किया कि हम high court से ना होकर सीधा आपके पास इसीलिए आए हैं because ऑलरेडी क्वेश्चंस पेंडिंग है, और कल को अगर मैं क्वेश्चन पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करता हूं, तो मेरी क्वेश्चन पिटीशन भी डिसमिस होने वाली है। और दूसरा, अगर समथिंग ऑल्टरनेट जजमेंट आ जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रेरी व्यू लेके आती है, सो द एक्सरसाइज ऑफ गोइंग टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन व्यू ऑफ द एडवर्स ओपिनियन अगर आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही आए हैं by challenging the decision of the session court under article 136 of the constitution. अब जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस वाज ए 3 जज बेंच जजमेंट, जिसमें वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव 2 जजमेंट्स। सेम फाइनल आउटपुट वाज देयर इन बोथ द जजमेंट्स, लेकिन जो ओपिनियंस थे, जो कि एनालिसिस थे, वो डिफरेंट थे। फर्स्ट जजमेंट में जो ऑनरेबल जस्टिस थे संजय किशन कौल, उनका primarily question of law while deciding this appeal was this, that only issue which we are concerned with is whether during the pendency of the proceedings under the said code which have been admitted,
the present proceedings under the NI Act can continue simultaneously or not. यहाँ पे डायरेक्टर के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी एनआई एक्ट के अंडर कंप्लेनेंट ने चेक डिसऑनर की कंप्लेंट फाइल कर रखी थी। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ और एक रेजोल्यूशन पास हुआ। नाउ इन व्यू ऑफ दिस, क्या एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी या बंद हो जाएंगी? दैट वाज द क्वेश्चन। जब ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट को अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थे दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज वेदर इन लाइट ऑफ कंप्लेनेंट हैविंग पार्टिसिपेटेड in the proceedings of the IBC 216 by putting forward its claim and consenting to accept some share as a creditor, coupled with the approval of the resolution plan under Section 31 of the IBC 2016, the signatory director in charge of the day to day affairs would stand discharged or relieved from the penal liability under Section 138 of the NI Act. सो जस्टिस पाद्रीवाला जी ने उन्होंने ये कॉन्टेक्स्ट निकाला कि कंप्लेनेंट आईबीसी के प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व था। जब रेजोल्यूशन प्लान फाइनलाइज्ड हुआ, एक्सेप्ट किया गया, तो कंप्लेनेंट ने भी जो कुछ पोर्शन था वो रिसीव करना एक्सेप्ट माना। नाउ इन व्यू ऑफ दिस सिचुएशन, अब जो एक्यूज कंपनी के जो डायरेक्टर के अगेंस्ट भी प्रायर टू दिस रेजोल्यूशन प्रोसेस एनआई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके अंदर जो पीनल लाइबिलिटी है, क्या वो डायरेक्टर के अगेंस्ट अब बंद हो जाएंगी या नहीं होगी? दैट वाज द की क्वेश्चन। So let us now first understand the complainant के arguments क्या थे, accused के arguments क्या थे, and how did the Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul arrived at the conclusion, and how did the Honorable Justice Pardiwala arrived at the conclusion. Let us understand that aspect. The first portion is accused जो director थे, because he is the main person right now before the Honorable Supreme Court. उसके जो arguments थे, they were focused on the three main limbs. One was the extinguishment of the debts and the offence. That was the first. Second is vicarious liability cannot survive company's discharge, and third is section 138 is primarily compensatory nature. So let us go through these arguments one by one in a brief manner. First, extinguishment of the debts and the offense. So अगर हम बात करें तो जो डेट है अंडर सेक्शन 138, इसका मतलब सीधा सीधा है, इट हैज टू बी ए लीगली एनफोर्सेबल डेट, राइट? नाउ जब कंपनी, जो कि ऑल्सो वाज द मेन अक्यूज्ड इन ए चेक डिसऑनर मैटर, obviously there was a debt against the company. Okay, now जब रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया, उसके कारण से कंपनी का डेट सेटल्ड हो गया, तो व्हाट डज दिट मीन इज, जब लीगली एनफोर्सेबल डेट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, तो देन वाओ हाउ कम दिस सेक्शन 138 वुड सर्वाइव? दैट वाज द कोर आर्गुमेंट बाय द accused director. So once the resolution plan approved under section 131 of the IBC, the original debt was extinguished and replaced by the plan terms. So when the foundational debt has wiped out, the basis for the section 138 proceedings no longer existed. That was the first limb in the arguments of the accused director. Second limb, that the vicarious liability cannot survive the company's discharge. अब देखो, we understand clearly that जो directors की liability है, that is a vicarious liability in a check dishonor matter when the check belongs to a company. अब जब मेन अक्यूज्ड के अगेंस्ट ही चेक डिसऑनर का मैटर खत्म हो गया, तो देन वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स शुड ऑटोमेटिकली बिकम नल एंड वॉइड.
So that was the argument ki that director's liability under section 141 of the NI Act is vicarious depending on the company's liability. The argument was that a director cannot be prosecuted without the company being an accused. Since the company liability was resolved because of the passing of the resolution plan in the IBC proceedings and extinguished under the IBC, the director's vicarious liability should also end. That was the second main argument of the appellant. The third one was primarily that the section 138 is primarily of a compensatory nature. Okay, it is the कॉन्टेक्स्ट विच इज जो ये बन के आ रहा था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, आप चेक जो है इशू करते हो टू सेटल सम सिविल लाइबिलिटी, राइट? अब चेक डिसऑनर केस जो है क्वेजी क्रिमिनल नेचर की होने के कारण अगर आपके अगेंस्ट चेक डिसऑनर की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो वो पीनल प्रोविजंस भी एक्टिवेट होंगे, या तो आपको फाइन दिया देना पड़ेगा या फिर आपको एज ए सेंटेंस का ऑर्डर भी आ सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल व्हेन यू आर कन्विक्टेड। तो उस केस में एक्यूज्ड का आर्गुमेंट ये था दैट proceedings under section 138 are primarily compensatory, और जो punitive element है ना वो it is incorporated at enforcing the compensatory provisions, right? The complainant had participated in the IBC process and was set to receive part of the debt under the resolution plan, argued that continuing the criminal case would be unjust and defeat the IBC purpose of giving corporate debtor a clean slate. So these were the three main arguments of the accused in this case. Now let us see what was the core of the complainant's argument. इस केस में इफ यू गो थ्रू द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस किशन कौल, उसमें एक स्पेसिफिक कमेंट भी आया है कि जिसमें कंप्लेनेंट ने अपने रिटन सिनॉप्सिस ही सबमिट नहीं करे, एंड they congratulated the complainant because उन्होंने written synopsis submit नहीं करे, and they said that it is fortunate कि आपकी ये जो judgment है आपके अगेंस्ट नहीं आ रही, accused के अगेंस्ट आ रही है, even though you have not assisted the honorable court by filing your written synopsis. So now coming to the कंप्लेनेंट आर्गुमेंट्स जो थे, कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट यही थे कि सेक्शन 138 इज ए पिनल प्रोसीडिंग, इट इज नॉट ए डेट रिकवरी प्रोसेस नहीं है। Okay, and second was the director's offense is independent and complete. It should be different from the offense of the company, cannot be related. Now, having now understood the arguments of the appellant as well as the complainant, now let us understand the findings of the honorable court. We will go through the findings of both the judgments passed by the judges. Firstly, we will go through the findings of the Justice Sanjay Kishan Kaul. So, where the honorable judge, categorically stated that the section 14 of the IBC make it clear that the nature of the proceedings which to be kept in abeyance do not include criminal proceedings, which is the nature of proceedings under section 138 of the NI Act. So, जब IBC की प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट चल रही है तो ये क्लियर कट आ गया है सेक्शन 14 में दैट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टॉप नहीं करी जाएंगी। सेकेंडली, we cannot lose sight of the fact that the section 138 of the act are not the recovery proceedings, they are penal in character. A person may face imprisonment or fine or both under section 138 of the NI Act. It is not a recovery of the amount with interest as a debt recovery proceedings would be. So they are not similar to each other. So अगर कोई व्यक्ति एक एनआई कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स को एक डेट रिकवरी प्रोसीडिंग के साथ सिमिलर मानता है तो दैट इज एंटायरली wrongful
thought process. So Section 138 NI Act is of penal character. Okay. Finally, in this judgment, Honorable Judge concluded that we are unable to accept the plea that if the proceedings against the company come to an end, then the appellant as a managing director cannot be proceeded against. We are unable to accept the plea that Section 138 of the NI Act proceedings are primarily compensatory in nature and the punitive element is incorporated only at enforcing the compensatory proceedings. All the arguments of the accused were set aside. The criminal liability and the fines are built on the principle of not honoring a negotiable instrument which affects the trade. So, having said that, the Honorable Justice Kishan Kaul, he dismissed this SLP. Now let us move to the findings of the Honorable Justice Pardiwala, where he went into a detailed findings that would also help us to understand the thought process which went behind while arriving at the conclusion. So firstly, obviously, the section 31 of the IBC. अगर हम सेक्शन 31 ऑफ द आईबीसी के बारे में बात करें, इट डील्स विद द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान विच शैल बाइंड एवरीवन, चाहे वो कॉरपोरेट डेटर हो, गारंटर्स हो, क्रेडिटर्स हो या कोई दूसरे स्टेक होल्डर्स हो. Once a resolution plan is passed, then it means it is binding on everyone. Second, whatever amount is allocated to the creditor under the plan, the same will have to be accepted without any option. This is the overall nature of the section 31. Honorable Court accepted that the approved resolution plan binds all the stakeholders, including creditors, and specifically, Justice J.B. Partiwala stated that no clause in the resolution plan, even if accepted by the adjudicating authority or appellate tribunal. Now, please see, this is important. No clause can take away the power, jurisdiction of the criminal court to conduct and dispose of the proceedings before it under the CRPC. So, clearly, IBC cannot take away the rights of or the powers or the jurisdiction of the criminal court to conduct and dispose of the pending proceedings before it. This is the first thing. Secondly, which is very important for us to understand, which is actually the base of the guiding factor for the Honorable Supreme Court also, is the section 32A. What does it say is liability for the prior offenses. Who are now liable for the prior offenses, for the offenses prior to the commencement of the insolvency process? Now please see, it starts with the subsection 1 starts with the notwithstanding anything, non obstante clause. So notwithstanding anything to the contrary contained in this court or any other law for the time being in force, the liability of a corporate debtor for an offence committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process shall cease, and the corporate debtor shall not be prosecuted for such an offence from the date of the resolution plan has been approved by the adjudicating authority. So what does this mean is कि जो corporate debtor की, right, अगर कोई offence commit होता है prior to the commencement of the resolution process, वो it shall cease, and corporate debtor shall not be prosecuted for such an offence from the date of the resolution plan. जो है रेजोल्यूशन प्लान जब पास हो जाता है उस डेट से ही विल नॉट बी द कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज द कंपनी विल नॉट बी prosecuted. That's one thing. Second is what happened that if अगर जो ऑफेंस है वो ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है, दैट इज द प्रोविजियो
फर्स्ट, व्हाट डज दिस से? प्रोविजो फर्स्ट सेज उसमें भी डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. But what does the proviso 2 says? This is very very critical because this establishes the basis where the criminal liability of the directors, criminal liability of the officers in charge for the operations of the company will still be there. So C provided further that every person who was a designated partner, officer in charge, right, who is in default or responsible to a corporate debtor for the conduct of its business or associated with the corporate debtor in any manner, and who are directly indirectly involved in the commission of such offence as per the report submitted or complaint filed by the investigating authority shall continue to be liable to be prosecuted and punished. So proviso 2 of the section 32A does not allow the criminal offense or prosecution of the individuals to be seized, and that becomes the basis for this judgment, where the the honorable justice Partiwala indicated that Honorable Supreme Court found the answer in Section 32A of the IBC, which clears the company criminal liability after the resolution. So once the resolution is passed, the liability, criminal liability of the company stands, set off, provided certain conditions are there. However, the second proviso to the Section 32A1 creates an important exception for the individuals, which is every person who was a designated partner, officer in default, responsible for the company's conduct, shall continue to be liable for the prosecution and punishment, even if the corporate debtor's liability has ceased. This is a very, very critical finding that sets up the tone for the judgment, that sets up the tone for the answer to the question that what will happen to the liability of the directors when, even after the resolution was passed, and the company is freed from the liabilities. सेकंड एनालॉगी जो ऑनरेबल जस्टिस पार्थिवाला ने कंडक्ट करा, दैट एनालॉगी विद द डायरेक्टर्स. आईबीसी एक्ट जो है, आईबीसी एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश द डायरेक्टर्स क्रिमिनल लाइबिलिटी under the NI Act. When we compare it with the guarantors, the Honorable Court reinforced its reasoning by comparing the director's liability to that of a personal guarantor. Honorable Justice Partiwala referred to the Lalit Kumar Jain versus Union of India, where it was held that even after the approval of a resolution plan, a guarantor's liability does not automatically end. सी होता क्या है, एक क्रेडिटर को उसने अगर 100 रुपए लेने थे कंपनी से, रेजोल्यूशन प्लान में आता है कि ओके अब क्रेडिटर को सिर्फ 70 रुपीज मिलेंगे. So 30 rupees का loss still has to be covered from the guarantor of the loan, जो कि एग्जीक्यूशन समय में लोन टर्म एग्रीमेंट्स के समय में डिफाइन किया गया होगा. Okay, so the court held that a discharge which the principal debtor may secure by operation of law in bankruptcy or in liquidation proceedings in case of a company does not absolve the surety of his liability. ओके, सो जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, उसकी लाइबिलिटी एब्सॉल्व नहीं होगी, उसकी लाइबिलिटी विल बी स्टिल इंटैक्ट अप टू द अमाउंट्स जो बची है आफ्टर दी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद जो पैसा क्रेडिटर को मिल गया है, रिमेनिंग पैसे की लाइबिलिटी गारंटर की रहेगी. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब गारंटर्स की लाइबिलिटी एग्जिस्ट है तो हाउ कम एक डायरेक्टर्स की जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो कैसे सीज हो जाएगी आईबीसी प्रोसीडिंग्स के इनिशिएट होने पर. तो अब अगर हम फाइनली की प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई जो एस्टैब्लिश हुए इस जजमेंट में, वो पहले उनको कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो ये पहला प्रिंसिपल क्या है, द
proceedings under the section 138 of the NI Act are penal in nature, okay, cannot be equated with the civil debt recovery proceedings. Second principle, the approval of a resolution plan under section 31 of the IPC extinguishes the corporate debtor's debt but does not extinguish the personal criminal liability of its directors for the offense of a check dishonor. That's categorically very well clear. Thirdly, Section 32A of the IBC, while granting immunity to the corporate debtor, expressly right saves the prosecution of the individuals responsible for the offense. एक्सप्लिसिटली प्रोविजो 2 जो है वो क्लियर कट बोलता है कि जो पर्सनल जो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन्स हैं राइट ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैं उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू रहेगा. Fourth principle, the liability of a director under Section 141 of the NI Act is not discharged merely because the company's liability has been resolved through the insolvency. And finally, a resolution plan is subordinate to the law and cannot contain clauses that override a criminal statute to absolve the offenders and their liability. और ये मैनी टाइम्स होता है कि भाई जब कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट या कोई इस तरह का प्लान एग्रीमेंट बनता है तो सर्टेन इस तरह के प्रोविजंस डलवाए जाते हैं सो दैट दिखाया जाए कि ओके एवरीथिंग इज नाउ सेटल्ड बट एट टाइम्स अगर वो एनी स्पेसिफिक प्रोविजन एनी स्पेसिफिक क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट इज इन डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्टैचू चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो will not be held as a legal clause in the eyes of law. That clause अगर वो not in compliance with the statutory mandate है definitely it is going to be an illegal and it will be revoked automatically when it will be any time has to go through a test before the court. एंड फाइनली अगर हम ऑपरेटिव पोर्शंस का जजमेंट का बोथ ऑफ द जजमेंट्स में यही था डिसमिस द अपील और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डायरेक्टर टू कंटिन्यू. अगर हम इस जजमेंट को फाइंडिंग्स समझने की कोशिश करें फ्रॉम द कंप्लेनेंट पर्सपेक्टिव कंप्लेनेंट को इट्स ए बिग रिलीफ फॉर देम दैट अगर डायरेक्टर्स जो हैं मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जस्ट टू इंश्योर कि हाँ हाँ मैं आपके सारे पैसे दूंगा तो डायरेक्टर्स जनरली साइन द चेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द चेक्स इस तरह से कि भाई ओके सारी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद समटाइम्स डायरेक्टर्स at their own files the insolvency proceedings and then claim that okay now all the proceedings including the proceedings of check dishonor जो हैं वो भी stop हो जाएंगी because now because of the IBC proceeding moratorium is imposed. ऐसा नहीं है. डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है एंड दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इशूइंग ड्रॉइंग द चेक्स knowingly that the checks will get dishonored whenever the payee is going to deposit is going to present those checks into its bank account. Okay, so for the complainants it protects the sanctity of the checks as a reliable paying instrument and prevents directors from using insolvency as a shield. That's a very big favor for the complainants. And अगर हम accused के perspective से बात करें तो then वी हैव सीन इन द ट्रायल कोर्ट्स में लोग यही आर्गुमेंट लेके जाते हैं कि देखिए कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है और अब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स जो हैं नहीं चलेंगी. तो दैट काइंड ऑफ डिफेंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. This judgment clearly and categorically and in fact in very expressive terms it says that जो proceedings against the directors against the signatories will keep on will continue for the check dishonor matters. Okay. And secondly, the directors must ensure sufficient funds should be there before issuing the checks because end of the day, your liability will not get over.
Okay, so the IBC is for resolving corporate debt, not escaping personal criminal accountability. आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर कट पता लग गया होगा कि डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी जो है इजीली रिमूव नहीं होने वाली, इवन अगर कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी चली जाती है। ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद द अदर स्टेक होल्डर्स जो कि एक चेक बाउंस चेक डिसऑनर का मैटर फेस कर रहे हैं और जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है या कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व है। दैट विल हेल्प देम टू स्ट्रेटेजाइज or to use this judgment in their matter. And if you have any specific questions or queries, you can send us those questions queries to our email id or WhatsApp, or you can put up those questions or queries in the comment box also, and we will try to respond to your queries on a priority basis. And thank you once again for going through this video. Jai Hind.